So thank you, Kshitij. I'm going to call you Kshitij. Okay. I hope that is Yes, okay. No definitely. server. No, Okay. that's perfect. Okay. You were all like Kshitij ji. I was like, so much Izzat hasn't been given for a while, and this seemed a bit off. But yeah, Kshitij works for me perfectly. Okay. So Yeah, welcome, Kshitij, the thank you founder of so much. Iron Man Lifestyle, an international Yes, personal development coach, helping men be more confident, get more dates, and have deeper, fulfilling relationships. Kshitij has helped thousands of men around the world through his transformational content and coaching over the past 5 years, for which he has been featured in various publications, including Vice, The Times of India, India Times, DNA India. I'm not sure what's Men's XP, but I've never read it, but I'm sure it's a great magazine, or what is it it's like exactly? But, it's like BuzzFeed for men. So I did a couple oh, of workshops for them. So it's just that. okay. Okay. Yeah. And now you're one of the most leading and sought out coaches to help men. But Yes. why only men? That's my most important question for the Yeah, evening I today. know. Why have you jumped on the bandwagon only to help men? Why not women? This is a very common question people come up. I mean, that's the first thing I've been asked on most of the podcasts and anyway, and also my Instagram DMs. So there are two reasons for it. Number one is because my experience has been with helping men only, right? So that's number one. And even all of my friends, which I helped before I started coaching and everything else, I feel my domain expertise is out here with men, and those are the people I could help. If I were to start coaching for women, I don't think I'd be as good. So I want to do something in which I can be the best in the world. And with dating advice, with regards to dating advice, helping people get more dates, I can proudly say that I would be one of the best people in the entire world. So for women, there are other ones who are going to be much more better. So I would let them do the job. So Okay. that's number one. But the second main thing is it's also a business decision. So anytime you start a business, rather than branching out into everything, you niche it down so that you're focused on one thing, and that really Okay. helps. Like Amazon started with just selling books, and then they transitioned into other things. So I would just get into dating advice for men and confidence building and everything for men. And then maybe if later we feel like we would branch out into other stuff as well. Okay. So you were just saying that you, as a business idea, also it makes sense. But किसी ने लिखा Yeah, because he's a man. I'm sorry, I'm a woman, and 90% of my clients are men. So I don't think ऐसा है कि yeah, just because वो man है तो वो man के लिए help करेंगे. मेरे clients mostly guys ही होते हैं. हाँ, girls हैं, but definitely. कम आते हैं because and लड़कियों को डेटिंग में पटाओ यार. तुम लोग ना बीच बीच में ऐसे टेक्स्ट करते रहोगे ना, इंसान ना बात नहीं It's कर okay. पाएगा कैसे से थोड़ा. It's okay. You 1 मिनट. ignore. हाँ. उनको So, ignore करो. We'll हाँ. have a So, conversation. so tell End me में हम सारा about chat your clear लेंगे. personal life. How did anyone help you, or did you help yourself? Did you go through It something was and that's why you decided to do this? from an all boys school, and I used to be very Okay. nervous around women myself. So it Okay. started as a personal need कि यार पहले मेरे को खुद की help करनी है. Because हाँ. जब school खत्म हुआ, college में गए, there were a lot of pretty girls around that I had crushes on, and but बात ही नहीं हो पाती थी. So एक होता है कि लड़कियों से बात नहीं हो पाती, और एक होता है कि तुम्हारी जिससे जो तुम्हारा crush है उनसे नहीं हो पाती. मेरी किसी से भी नहीं हो पाती थी. Because it just Okay. the idea. So I don't have a lot of women in my family, और होते भी तो I grew up in a boarding school. तो बहुत ही different है. So I don't have a sister. So the exposure to the opposite gender बहुत कम था. And naturally that is something that I had to learn in college. And I looked out resources. There was a friend of mine जिसने बताया मुझे कुछ चीजों के बारे में. Then I read a number of books, saw a couple of YouTube channels, started following coaches outside, and then उनको देख देख के we started applying it here in India. So I started to go out. College में जाके I started to socialize more, at least try करके. And then I started going out to malls and bars and clubs and started meeting people there. तो धीरे 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 रिजेक्शन खा खा के कुछ चीजें समझ में आने लग गई कि इंडिया में कैसे होता है. एंड वी वर जस्ट वेरी परसिस्टेंट विद इट. और फिर पूरा वो सब करके फाइनली आई रीच द पॉइंट 4-5 साल बाद, जब बहुत ही ज्यादा रिजेक्शंस खा लिए हैं, हजारों अप्रोचेस हो गई हैं, वेयर आई एम लाइक ऑल राइट, आई कैन सॉर्ट ऑफ मेक सेंस ऑफ दिस. और मुझे समझ आ रहा है कि किसी को अप्रोच कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, और अट्रैक्शन बिल्ड करके. सो दैट दे आर आल्सो वेरी हैप्पी दैट दैट समवन किसी ने अप्रोच करा है हमें, और एक बहुत अच्छा सा नॉन क्रीपी कॉन्वर्सेशन करा है, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद दैट. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड हेल्पिंग सम ऑफ माय फ्रेंड्स. फिर वहां से इट टर्न्ड इनटू अ प्रॉपर बिजनेस थिंग ओनली. Okay. Okay. Wow. So Yeah. you've been doing this for 5 years, right? I have been coaching for 5 years. I have been learning and practicing for over 10 years now. Oh, wow. Okay. So So, I okay. practiced it for 5 years. Everything I teach
has been tried and tested. It's not something जो मैंने किसी book में पढ़ के बता दिया है बस, या it's not something because SEO के लिए बस वीडियो चली गई है. This has been clear, testing stuff. So if you start a YouTube channel, तुम किसी भी topic पे start कर सकते हो, and it sounds great. But वो real life में और theoretical application बहुत अलग हो जाता है. So whatever I've been teaching has been tried out multiple times by a number of people, by me, by all of our clients, and it works. So we have a proper system that works, and while people can still be themselves and build confidence, the core part is you've got to better yourself as a person if you want to have a better dating life. Yeah, true. वो बोलते हैं ना कि अगर से खुद ही इवॉल्व नहीं हो, तुम दूसरों को कैसे रास्ता दिखाओगे? तो पहले तो आंखों से पहले खुद की पट्टी उतारनी पड़ती. But having said that, I still feel like doctors को हर बीमारी नहीं होता, उनको फिर भी बीमारी का क्योर आता है, right? So I'm sure you get many guys with different problems, and once वैसे तो मुझे पता है कि एक 5-6 मे बी 5 और 10 के बीच में उनके साइड प्रॉब्लम्स होते हैं गाइस के, ठीक है. जितना मैंने इन 2 साल में गाइस के साथ डीलिंग की है, ऑफ कोर्स सोशल एंजाइटी एंड हाउ टू अप्रोच अ गर्ल इज क्वेश्चन नंबर 1. हाँ, सो बट चलो ठीक है, आई विल कीप माय क्वेश्चंस असाइड. सो टेल मी, if I would ask you, which is the most common question asked you? They vary. It's just like, so the way we coach, वो ऐसे रहता है कि हम ना problems भी हम define करते हैं. अच्छा, मेरा वीडियो फ्रीज can you hear me? हाँ, तो जब हम coach करते हैं उसमें there are very clear problems. The number one problem is यार approach कैसे करें, बोलें क्या, बात क्या करें, डर लगता है. एक बार उसके आगे जाते हैं तो फिर वो रिपीटेड आती है कि अब बात तो कर पा रहे हैं बट समझ नहीं आ रहा आगे क्या बोले. अब हम अटक गए हैं, कॉन्वर्सेशन थोड़ी देर अच्छी चल रही थी बट आगे क्या बोले. फिर ऑकवर्डनेस आती है तो फिर वो कॉन्वर्सेशन से छोड़ के चले जाते हैं बहुत सारे लड़के. सो दैट्स वन बिग प्रॉब्लम. फ्रेंड जोन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ा रहता है. 2 साल 3 साल एक ही लड़की के पीछे ऑब्सेस हैं और सोच रहे हैं कभी जाके वो लड़की रियलाइज करेगी कि हम यहाँ मेरा सिग्नल है कि क्षितिज का सिग्नल. एक मिनट क्षितिज, आई कैन नॉट हियर यू. 1 मिनट. श्योर जस्ट 1. Yeah, let me just check mine also. I think मेरी side ठीक है. Yeah, guys, can you let us know किसका signal off जा रहा है? Guys, is it my signal or Kshitij signal? किसका है ये properly? Lady signal. अच्छा मेरा signal है. Oh shoot. Both are fine कह रहे हैं लोग. I think अच्छा, both are fine. पता नहीं, मैंने I तो didn't hear you what you just said, which is the most common question. One is approaching. Yeah. One is approaching. फिर उसके बाद होता है approach कर लिया, बात क्या करें, बोले क्या. फिर ऐसा होता है कि बोलते बोलते कॉन्वर्सेशन बहुत सही जा रहा है बट एक पॉइंट आता है जब पीपल रन आउट ऑफ थिंग्स टू से, दे लाइक अब पता नहीं क्या बोलना है, एंड देन उसके बाद बहुत ऑकवर्ड सा सिचुएशन अवॉइड करने के लिए दे लीव द इंटरेक्शन. तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है. देन एक फ्रेंड जोन का प्रॉब्लम बहुत कॉमन रहता है कि 2 साल 3 साल एक लड़की के पीछे ऑब्सेस्ड है एंड सब कुछ कर रहे हैं वो लड़की के लिए बट अपने इंटेंशन नहीं बता रहे हैं कि लाइक करते हैं या देयर इज लाइक ये उनका बेसिकली इंटेंट है. And they're hoping कभी 2-3 साल बाद वो realize करेगी कि ये कितना अच्छा friend है मेरा, and then she'll start liking me, which almost never happens. तो बहुत ही rare cases में ऐसा होता है, and that's the worst way to go about with your dating life. Right. But I think most of the time guys just keep hoping and waiting कि उनको हाँ बोलेगी, and I think वो लोग अपनी लड़कियां ज्यादातर busy होती है अपने अपने life में, and ऐसा नहीं कि उनको dating advice नहीं चाहिए, but I think the girls have more more easier than the guys, I think, because guys in a way, yes, generations, guys are the ones who propose and kind of tell the girl that they like, and girls are generally अपना सहमा होते हैं, लोग बोलते नहीं कुछ, पर ऐसा नहीं करके उनको इनफ लड़के नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं तो कहीं कहीं वहां भी बिजी हो जाते हैं, पर इन लोगों को दिखाई नहीं देता और फिर उनका दिल दुखता है कि like oops, we were really hoping that she would say yes. So when this happens, देखो मेरा एक नया point of view है जो कोई नहीं बोलता, पर मेरा ये point of view है. It's been 2 years doing free counseling, and I see many guys, many over, they have this thing कि हमको अगर से किसी लड़की ने ना बोला तो मतलब it's the end of the world, ठीक है, कि मुझे reject किया. So this word rejection, I'm completely against, because I believe no human being, one human being to another, cannot in any way have the power to reject you. Yep. You are right. That person is not there and you're not here. You both are equals. So एक तो तुम कोई कचरा नहीं हो कि तुम्हें उठा के फेंक दिया. तो पहले अगर से ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर से लोग समझ जाए ना कि तुम एक अच्छे इंसान हो,
maybe they have said no to you, maybe they have refused your proposal, but it doesn't mean you know कि आप में कोई गड़बड़ है या something. So when they come to you, when they are being said no to, I would not say they are rejected, because I think we are too precious, too amazing human beings that to be rejected as some clearance sale का माल. ठीक है? Yeah. So what do you think? What happens in this case when they're said no to? How do you tell them to cope with it? They need to stop taking things so personally. Because अगर तुम किसी लड़की को approach कर रहे हो, जैसे what I teach is called approach. जैसे how to when you meet a girl, when you see someone in person, उनको जाके approach करना. हम naturally उस moment पे एक लड़की एकदम free ही नहीं बैठी होगी कि कोई लड़का मुझे approach कर रहा है, या maybe she has number of things going in her life as well. Maybe कुछ career में problem है, family issues चल रहे हैं, monetary issues चल रहे हैं. Maybe she has a boyfriend or an ex-boyfriend, or what is going on. काफी चीजें होती हैं. So when you approach someone, एक तो उन्होंने तुम्हें तो reject करा ही नहीं है. अगर उन्होंने मना करा भी है, so it's just the approach, जिस तरीके से तुमने उनसे बात करी है. Because she's seen like 30 seconds of your life and your personality. So she doesn't even know you properly. Like the people that know you properly are your closest friends, your maybe sisters, your girls who are friends, your mother, your family members. वो तुम्हें reject नहीं करते हैं, right? And if everyone agrees कि अगर someone gets to know them थोड़े time बाद, they will like them. Everyone knows this. यार शुरू में they might not like me, but थोड़े time बाद they'll eventually like me. So जब किसी लड़की को approach कर रहे हैं, उन्होंने पूरा तुम्हारी personality देखी नहीं है, तो उनके पास इतनी power है ही नहीं reject करने के लिए. And second thing is viewing every approach as a learning experience. तो क्योंकि उन्होंने तुम्हें नहीं reject करा, तुम्हारी approach को reject करा है, तो हम वो approach को better कर सकते हैं और आगे जाके. And then वो जो rejection rate या जो भी दिमाग में सोच रहे हैं कि लड़की ने मना कर दिया है, वो बहुत better हो जाएगा, right? Because you work on that skill set part of it, you work on that approach part of it. And then again, it's not about कि लड़की को तुमने approach करा और हर एक लड़की को हाँ करना है. Because you would not want to date each and every girl out there. So when you approach someone, इस mindset से approach करना कि वो मेरे को reject कर देगी तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी is not good. A better mindset is I like this person out here, but I have no idea about them. मुझे पता नहीं है उनकी life में क्या चल रहा है, मुझे पता नहीं उनकी personality कैसे, if I will even get along with her. तो मैं जाके approach करके बात करके देखता हूँ कि बात आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, and if I like them or not. So if there's that compatibility or not. If there's compatibility, it's great. If there's no compatibility, then you go meet someone else who is compatible with you. So this idea that every approach should work is not good. Even me, my approaches don't work well most of the times. But then the number of times they work well, they work pretty well, and I'm happy with that. So I'm just looking at the positive side, and rather than यार कोई अपनी life में कुछ कर रहा है, why does it matter? Right. It's just that. Yeah. आजकल कुछ बच्चे ये भी कर रहे हैं, बच्चे तो मैं इनको बच्चे ही बुलाती, पता नहीं मुझे, I think they're still very young. आप कितने साल के हैं? I'm actually 50. You don't look 50 at all. तो हाँ बच्चे I know. I have a 19-year-old and a 10-year-old boy. Wow. तो उनके साथ भी आप dating problems discuss करते हैं 19-year-old? Yeah. Very openly. In our family, actually, I think I am trying to change the mindset of the current generation along with, I think, our generation, because I'm trying to जो हमारे पेरेंट्स के साथ हम नहीं कर सकते थे, हम बिल्कुल बात नहीं कर सकते थे, अब मेरे बच्चे मेरे से बात कर सकते हैं. I know every boyfriend or अभी तो गर्लफ्रेंड नहीं हुई, मेरा बेटा छोटा है, but I am hoping that they will come to me with their problems. So if there is a breakup, we speak about it. I support my daughter through it, and if she's having any crush, or of course I know कि इतना टेम्पररी होता है ये सारे इन लोग को समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है कि एक्चुअली लास्ट नहीं करने वाला, पर ये लोग इतना ज्यादा अटैचमेंट क्रिएट करते हो इस इंसान के साथ, और वो जो इंसान छोड़ के चले जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है. आई थिंक आपके भी काफी फॉलोअर्स आ रहे हैं, तो जो भी नहीं जानता, मैं काउंसलर हूँ और मैं फ्री काउंसलिंग करती हूँ फॉर मोस्ट इश्यूज. I'm not a sex therapist, so don't come for that. But I do have some issues with porn addiction and all that with a neuroscientist. Please go watch that. But for heartbreak, there is a specific session which I did. It's called a psycho-educational group, because we teach, as a counselor, I teach you step by step what's happening in your brain, what are you experiencing, and how to overcome. Of course, हम आपको सिर्फ बता सकते हैं माउंटेन चढ़ना कैसे, आपको चढ़ना पड़ेगा. Overcoming breakups are never easy. You will have to deal with the withdrawal symptoms and all. So whoever's listening to me today and is going through any heartbreak issues, please go watch that. So tell me, Kshitij, आजकल casual relationships का बहुत
it's very, very common. So what is your take on it? Are you okay with it? I think What is- casual relationships पहले भी होते ही थे, but आजकल maybe ज़्यादा हो गए हैं. They've been popularized by dating apps and everything. My take, I don't know if it's consensual. I don't have much to say, because I think it's one of those experimental times as well in your 20s. जब तुम experiment करते हो, what you like, what you don't like, and it's a lot of it is related to those emotional blocks as well. If someone has a commitment phobia, someone has had abandonment issues in the past, they would not want to commit. So casual relationships ज़्यादा होएगा. So a lot of it has to do with the parenting as well that they've received and the self-esteem that you have, which has been built up. But generally, a little bit of experimentation, I think, is fine, so that you know what you like, what you don't like. This idea of marrying the first person you date is not something that I 100% agree with. If someone finds someone like that, it's great. But वो जरूरी नहीं है कि हमेशा पहली बारी click करेगा. So the youth these days want to definitely experiment and see what they like, what the other person likes, what kind of person they like. And I think it's fine. But of course, anything taken in extremes, तो problem create करता ही है वहाँ पे. Right. So जैसे आपने कहा कि you don't have to marry the first person you meet. तो मैं मेरे analogy में मैं buffet वाला analogy देती हूँ कि you know different dishes try करो, then you finally end up eating that one dish that you like at the end. But even उसके साथ आप कहीं ना कहीं monotony तो set होती ही है. But it's easy on the digestion, it's good, it's comfort food. So those are the relationships that we end up with, right? So आपके पास जब लोग आते हैं, so do you do a coaching class or do you do these kind of webinars? How does one reach out to you? So I have a YouTube channel, and uske niche so we give out free content काफी सारा. If anyone watches that free content and applies it, they will have amazing results. जो हमें हमेशा DMs आते हैं. For a certain group of people who want my personal help and my team's help. So we have 4 coaches right now, including me. तो हम 4 coaches मिलके हम help करते हैं उन्हें with different things, texting, उनका online dating ठीक करना, social anxiety, their verbals बात कैसे करनी है, and then approach कैसे करनी है. Like we break down everything. So we have a 90-day mentorship program, online mentorship program for just, it's a premium program for only select few people जिनको एक higher level of service चाहिए that they want to pay for and they want my time as well. Free stuff के लिए हमारा YouTube channel है. So if anyone wants, they can book a call with us. The link is always under every video. You click on it, you apply for the program. We go through that. Then if the application is accepted, then someone from my team calls them up. फिर उनसे बात करके उनकी dating life देख के क्या problems हैं, अगर हम help कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते, then we select the clients we want to work with, and then over a 90-day period we help them out. How do you select the clients? There are a couple of things. Number one is, are they coachable or not? कि काफी लोग ये होते हैं वो हमसे मुझसे या मेरे कोचेस से सीखने की बजाय वो हमें सिखाने लग जाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है. So no matter how much money they're giving us, we don't want to work with them because there's a reason कि हमने अपना business start करा है ताकि मैं अपनी life chill तरीके से जी सकूं. So second thing is, I will never reach out to someone. I will never be like कि please come. अगर वो आ रहे हैं, if they're in the sales process, we will close them on the phone, we will follow up on the sales one, but it's always inbound. They have to take the first step that they need our help. So we maintain that stuff कि तुम हमारे पास आ रहे हो, कुआं घोड़े के पास नहीं जा रहा है, प्यासा आ रहा है, basically प्यासा अपनी प्यास बुझाने आ रहा है. Then it's जब हम फोन पे बात कर रहे हैं उनसे, तो the sales team and जब मैं भी बात करता हूँ कभी भी, now I'm not doing any sales calls, तो बात करके थोड़ी vibe आ जाती है कि क्या है क्या नहीं है, right? If someone is being disrespectful on the phone, या maybe वो disrespectful भी नहीं हो रहा, normally भी बात कर रहे हैं, but वो हमारी vibe बैठ नहीं रही है, they're like हाँ भाई क्या हाल है तुम्हारा, फोन क्यों नहीं किया तुमने मुझे, and they're sort of berating us, या फिर कुछ भी करके they're acting too cocky. जैसे एक client का मैं बताता हूँ, उसको हमने लिया नहीं था, so this guy was like he was talking to the team and everyone was like यार क्षितिज से बात करनी है, but क्षितिज ने दूसरे लोग इसीलिए हायर कर रखे कि उनको मुझसे ना बात करनी पड़े, तो उनका काम, उनकी जॉब इसलिए है कि वो मेरे पास ना आए. तो फोन पे आके लोग कहते हैं कि क्षितिज से बात करनी है, मैं टीम में जाएंगे, वो नहीं हो सकती, सॉरी. They're like यार हम पेमेंट नहीं करेंगे जब तक क्षितिज से बात नहीं होगी. So maximum what we do is I send a voice note or I send a video, but हम बात नहीं करते. They're like मैं नहीं करूँगा पेमेंट, क्षितिज से बात करनी है, like वो नहीं होने वाला, we don't want you as a client because वो आगे जाके भी मेरे पर्सनल स्पेस में आएगा. So they need to understand proper boundaries, like sessions हैं, WhatsApp groups हैं, there's a Facebook groups हैं, वहाँ पे तुम हमें reach out कर सकते हो, but you can't call me up anytime रात के 12 बजे, right? तो वो नहीं होता है. So those boundaries need to be communicated. So we have amazing clients जिनको boundaries communicate हो जाती हैं, but then there was this one guy, sales team से बात कर रहा है, like क्षितिज से बात कराओ, and the team is like नहीं यार, he's not available.
and he's like बात कराओ नहीं तो मैं तो नंबर वैसे भी निकाल ही लूंगा, right? So he was the son of some big Bollywood producer or something, right? So he's like, हाँ, so he's like मैं नंबर वैसे भी निकाल ही लूंगा मेरे पापा को बोल के, and मेरे पापा कर रहा था. So he's like ये तुम जो fake, guys, can you put Sorry, somebody. Shashank, can you mute? Can you mute Yeah. yourself? And I've Yeah. made some people host ना, तुम लोग कर क्या रहे हो? Co-host बनाया, mute करो. हाँ, sorry, बोलिए. It's okay. So that guy is like कि मेरे पापा से बात करनी पड़ेगी साइन अप करने के लिए एक डेटिंग कोर्स के लिए, तो हम वो भी नहीं करते. Will not talk to your family to be like यार please. I was like यार you handle that. If you want to come. You don't want to come, don't come. So he's like पापा से बात करो, हमने मना कर दिया. तो फिर कहते कि फेक बातें मत करना पापा से कि हमारे पास कि हम अप्लाई करोगे तो ही लेंगे ये वो वगैरह वगैरह. He was thinking it's all marketing, right? जो आधे टाइम होता है, बट हमारा नहीं होता. We've got enough clients coming in all the time. So eventually उसको हमने बैन कर दिया, and then he's like यार please यार. So we never signed him up. I was like ये कॉकी बन रहा है, इसको लग रहा है इसके डैड कुछ कर लेंगे यहाँ पे. So they like and the team was like यार हमें पसंद नहीं है. Like मुझे भी नहीं पसंद है अगर तुमसे ऐसे बातें कर रहा है ना. So it was a new team at the point in time. They like अच्छा ठीक है, okay, because they were thinking if it's a sale going on तो हम सुन लेंगे. I was like यार हम नहीं सुन रहे हैं किसी का भी. If they're talking to you like this, they're talking to me like this. So तुम्हारा काम है filter out करने. If I get these clients who are cocky, who are not listening to me, who are being demeaning, condescending, या वो चीजें apply नहीं कर रहे हैं, those are not the clients you want to work with. You want to work with people जिनको सीखना है, जिनको बाहर जाके apply करना है. So that's a process that we use to filter out some clients. I think that is true of any, I guess, any business for that matter. It Yeah. applies to me also. I'd never take Yeah. clients. And एक तो वो generally हमारा जो मेरा जो profession है, it has a lot of stigma, right? कि oh my Right. god, counselor से बात कर रहे हैं. So that is the thing. Does it happen with your thing कि oh my god, dating coach के पास जा रहे हैं? Oh yeah, I mean, counselors are still heard of. Mental health is still heard of. A dating coach is not even heard of. आज तक कोई dating coach इंडिया में exist ही नहीं कर रहा है. बाहर भी बहुत कम ही है. So it's a completely new industry that is coming up. So I mean, industry भी है यानी it's just like me and maybe one or two more people कहीं पे. But it's just mainly me that's springing up and being like यार ये problem बहुत बड़ी है देश में. इसको थोड़ा ठीक करते हैं. So definitely huge stigma is involved. Even me telling my family and me telling my friends. I took a long time to even tell them that this is something I want to do. And naturally, after college, मैंने 2 साल और wait किया था before I started doing all this. So is this your main business or do you do something else? Yes, this is my main business. So this is like I graduated. Yes, I graduated in BSc honors in statistics. So I've been a 90% all my life, and then it was a shock to my parents to be like, अच्छा ये करना है तुझे 90% marks ला के. So that was that. So we never had a conversation ऐसे clearly because वो मना ही करते हैं. उनका सपना था बेटा engineer या फिर IAS बनेगा कभी जाके. So I was like नहीं, actually मैं थोड़ा सा this is what I want to do. I had a startup बीच में 2 साल and then we closed that down and then I naturally came here. इसका किसी का फोन हाँ. Mute करो बच्चे लोग. तो मैं ये सोच let me see if I can make anybody else host or Anilanshu, I'm making co-host. Can you please just take care of these people who are doing this? So एक मुझे ऐसा thought आया. मेरे पास इतने जो youngsters आते हैं, उनको mostly social anxiety होती है. उनको रोमांस ऑटोमेटिकली उनको एक तो सिंगल होने से डरते हैं आजकल क्योंकि सब लोगों के पास गर्लफ्रेंड है उनके पास नहीं है. So एक वो है, you know, the social media creates this whole thing that everybody is dating and everybody is in a relationship. वो अलग बात है. मेरे Discord server पे आधे लोग तो heart broken बैठे हुए हैं. I have a Discord server where it's like a virtual support group. So we have different things that we do and they chat and they support each other besides they give free counseling. So I was just saying कि you are educated, you're intelligent, you're quite good looking, you speak well, and if this is that's what I want to tell everybody. अगर से इनके साथ ऐसा हो सकता है जो ये कह रहे थे कि इनको भी टाइम लगा. So this is kind of something they need to understand, right? It happens to everybody. It doesn't matter, and it's all about compatibility finally, right? Right. हाँ जी. Definitely. So टाइम तो बहुत ही लगा था. फर्स्ट ईयर में when I didn't know anything, I was just so excited कि वहाँ पे there were so many girls. तो मैं सबसे जाके बात करता, सबके नंबर ले लेता था. और फिर वो आजकल जैसे मीम्स फॉरवर्ड होते हैं तो उस टाइम पे संता बंता के जोक्स फॉरवर्ड होते थे. तो मैं रोज जोक्स फॉरवर्ड करता था सोच के कि यार कुछ हो जाएगा उससे, बट इट वुड नेवर हैपन.
So it's a huge part of dating is about just risking yourself out there. Like, jo rejection wala party, you have to risk being rejected to have something. Because I think it's one of the amazing forms of romance that men go through. Because when we approach a woman or when we seek out a woman, like we're taking our heart on our sleeve and we're like, "Ye lo crush kar do, please." But हम फिर भी करते हैं वो. So that's one of the most romantic things that anyone could do for anyone. And if सामने वाला person is too bitchy about that or they're acting cocky, then I mean उन्हीं का loss है. But you did everything that you can do from your end, and I think that's amazing. And women just out there choosing. अच्छा ये लड़का नहीं ये वाला नहीं ये वाला. And यहाँ पे लड़के अपनी पूरी ego crush करवा रहे हैं, इज्जत crush करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, दोस्तों के सामने बेइज्जती करवा रहे हैं. But I think it's amazing being a man. Like you also said अभी इसी podcast में थोड़ी देर पहले कि girls are sort of वो choose करते हैं, उनके पास आता है, receive होता है, और लड़के जाके extra मेहनत करते हैं, reject होते हैं ये सब. I think it's an amazing thing. I would want to. I mean, ऐसे ही रहे perfect है, because that's what sets me out as a man. कि मैं वो risk ले सकता हूँ और मैं वो झेल सकता हूँ, and that shows me that shows my confidence, that shows my value to the other person. कि अगर ये बंदा approach कर रहा है मुझे और इसको ये फर्क नहीं पड़ रहा कि reject हो रहा है, इसकी इज्जत down जा रही है, और rejection के बाद भी if you can keep your cool and you don't like get angry at the girl, जो कई लोग हो जाते हैं कि how dare you reject me and everything. So that guys mute कर देना please. हाँ. So that really sets you apart. And that's an amazing way for men to set themselves apart. And usually यहाँ पे सब 20s में होंगे. I think this is the perfect time for you to develop that emotional capability of risk taking, facing your own rejections, all of that. It'll be amazing. I'll take your questions, but later. I still have questions for Kshitij. Let me get, because I also have lots of clients who ask these questions. So I need to get the answers for this. So अभी जब आपने कहा कि लड़कियां, many podcasts, I've always told the girls that if some guy comes and proposes to you, don't act too cocky about it. You don't need to humiliate them. You don't need to go tell your friends and dhandora pitto fire ki, you know, isne bola rahe, and make fun. So I hope if any girl is watching, please be careful. But ऐसा भी होता है क्षितिज कि लड़के जब मेरे पास आते हैं कि मैम हमको ये लड़की अच्छी लगती है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सामने वाला ने क्या तुम्हें कोई भी साइन दिया है कि they are interested. Many a times they go and say it when they either the girl is already committed somewhere or she's given absolutely zero signals. तो आपको क्या लगता है कि should they approach even if there are no signals? What is your take on this? Okay, can you give me the context for this? ये स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, या रैंडम स्ट्रीट पे हो रहा है? स्कूल तो बहुत कम होता है, कॉलेज की बात हो रही है. Like no, very rarely 13, 14, 15 come to me. They are 15 onwards. So let's assume 16, 17 जो एज होता है कॉलेज लेके 18 प्लस लेके चलते हैं. हाँ, like जनरली या तो नेबर है या तो क्लासमेट है. क्लास में है. हाँ. ठीक है. I would, so एक तो you anytime you approach someone, you never propose, you never like I love you, I like you, anything. वो कभी नहीं करते हैं. कोल्ड अप्रोच में लाइक जब तुम सेम सोशल सर्कल में नहीं हो, जैसे क्लब या बार हो गया या फिर पब्लिक में हो गया, मॉल में तुम कहीं पे जा रहे हो, सो वहां पे भी आई यूजुअली अप्रोच ईदर ऑन सम सिचुएशनल स्टफ और आई जस्ट बी लाइक हाय, आई थिंक यू आर क्यूट, आई वांटेड टू से हाय, एंड जस्ट दैट, माय नेम इज क्षितिज, व्हाट्स योर नेम. सो माय गोल आउट देयर इज नॉट टू बी लाइक कि मैं प्रपोज करूंगा एंड शी विल से यस एंड इट्स डन. माय गोल इज जस्ट टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, गेट टू नो मोर अबाउट हर एंड देन सी वेयर दैट गोस एंड देन फाइंड आउट इफ शी इज कमिटेड और नॉट एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ. So you never propose. It's never like मैंने बोल दिया कि I like you और वहाँ लड़की जैसे बैठी बस वेट कर रही है कि कोई लड़का आएगा I love you बोलेगा और वही है. I mean she's got tens of options. वो लड़के Instagram DMs पे लगे हुए हैं पूरे टाइम. Men are just उनके Tinder पे, उनके ऑफिस में, कॉलेज में, even the Uber drivers everywhere. Like men are just after. तो ऐसा कोई reality नहीं होता है लड़कियों का जहाँ उनके पास option नहीं होता है. So for you to differentiate yourself, you need to go in with like having a conversation. So she also needs to see sample देखना है, sample size देखना है कि what is really going on while she's talking to you, and then maybe धीरे-धीरे attraction बढ़ता है, तब जाके finally something happens, right? But then if there's attraction, का इलाज बताओ, ग्रुप का. Can someone chuck him out? Push, yeah. Okay, you just speak. Then, considering I've pinned both of us, I'm very surprised how this is happening because I pinned you and my this thing, so it's strange. Generally, ऐसा नहीं होता है. I've chucked him out. I've banned him. Don't worry. Yeah. Okay, second time. कोई नहीं. I've banned him. Anyone else wants it, will like remove them as well. Ma'am, could you please just change the settings? I'll remove. क्या बेटा? क्या? Ma'am, please change the settings and allow only host to unmute.
It will solve the problem. Okay, wait यार बाबा, अभी एक तो सेटिंग्स ढूंढनी पड़ेंगी ना यार. हाँ That's तुम the म्यूट issue. अपॉन एंट्री. अच्छा अलाउ यार, एक तो ना ये प्रॉब्लम है कि मैं फोन पे हूँ, पता है. मैं अगर सिर्फ Yeah, अभी तक yeah. मेरा कंप्यूटर सिर्फ तुम लोग, आई मेट सो मेनी ऑफ यॉल जो है इधर, मुझे जब से जानते हो, हाँ. काफी लोग यहाँ Where's the पे हैं जो setting, bro? मुझे जानते Where's हैं. the कैन यू ऑल setting? Tell प्लीज me. एटलीस्ट बी Yes, लिटिल ma'am. मोर. I'm doing it. I'm doing it. Wait a Okay, second. thank गाइस you. चैट पे कर लो. एंड हाँ. इट्स वो कुशाग्र को तो बैन कर ही दिया है यार. इट्स ओके. एक दो लोग तो बीच में बोल ही देते हैं, ये हर एक पॉडकास्ट नहीं, में. बट आई नो आई कुशाग्र थिंक को. I know it's not an issue. from my Discord. अच्छा चलो कोई बात. अच्छा हाँ. वो बैन कर दिया उसको. सॉरी. अच्छा, अब कोई बोल बात देना कि नहीं. क्षितिज ने बैन कर दिया एकदम से. हाँ हाँ ठीक है. अच्छा तो हम लोग ये बोल रहे थे कि हाँ. तो जब, बट प्रॉब्लम ये है क्षितिज कि ये लोग बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, पता है, लड़के आई आजकल. नो दैट्स द बिकॉज बिगेस्ट प्रॉब्लम. एंड आप बोल रहे हो आई लव यू मत बोलो, मुझे लोग आई लव यू बोलते हैं लाइक विदाउट यू. सो लाइक I think it's so. Just imagine if it's happening to me, how much it must be happening to others, right? Yeah. The other girls. So आज जो बिकॉज भी उनको देख रहा लग रहा है आप है उन्हीं की एज के हो. उनको नहीं लग रहा है आप 50 के हो. उनको लग रहा है आप उन्हीं की एज के हो. वो फैमिली स्टार्ट करने के सपने बना के बैठे हुए हैं उदय चोपड़ा जैसे धूम में. नाम वाम सब सोच के बैठे हुए हैं सब यहाँ पे. So actually, नहीं, but I'm telling you, they are. That's the reason most of them can't get over it, because they go with such high expectations कि मैंने उसको बोला तो मतलब she has to like me. So how do you deal when they come with this thing? How do you tell them? How do you decide telling them कि अच्छा it's okay? What is there a specific techniques you have like to give them? We do, but सबसे पहले we tell them it's unrealistic if you think कि तुम जाके कुछ बोलोगे और वो लड़की मिल जाएगी, या फिर एक कोई अमेजिंग सी पिकअप लाइन होती है, एक मैजिकल लाइन बोलेंगे and the girl will get attracted to you. It's just unrealistic. So you need to learn how to go in, strike a conversation and build attraction. That usually happens if you know how to hold a nice conversation. But more so if you can have an emotional, like the conversation में थोड़े emotions होने चाहिए. So emotions isn't only like वो दिल का दर्द और वो सब, but it's more like fun and banter and all of that stuff. There needs to be flirting, there needs to be teasing. तो अगर वो चलता है then definitely some amount of attraction gets built. और वो attraction build होने के बाद if it makes sense, then वो बात आती है कि you tell her that I like you and everything. शुरू में अगर तुम वहीं से start कर रहे हो, you'll just end up being called a creep and a weirdo. So you have to wait it out. You definitely have to wait it out, and you need to go in with still hinting that you're interested in her. Like the intention needs to be clear कि मैं बात इसलिए कर रहा हूँ because I'm interested in you. Not because मैं as a friend या एक जैसे ऑफिस में होता है बहुत बारी लोग अपनी कोवर्कर पे हिट करते हैं बाय बीइंग लाइक कि मैं तुम्हें काम में हेल्प करता हूँ, या फिर हम कॉलेज में कहते हैं हम होमवर्क करते हैं, which अगर अट्रैक्शन है पहले से तो would work, बट अगर अट्रैक्शन नहीं है एंड लेट्स से तुम साथ में होमवर्क कर रहे हो एंड यू ट्राई टू मेक अ मूव, then that will really make the girl very uncomfortable because the intention is clear. She literally views you as a friend, so it needs to be very clear out there कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है. It's such a fine balance, right? It is. ज़्यादा मत करो, कम मत करो, हाँ. ज़्यादा टेक्स्ट मत करो, you know, and all of that. So it's like such a texting तो फिर भी हाँ, texting तो फिर भी बात की बात है, and इसीलिए इधर dating में you don't learn anything. I mean theory वगैरह सुन के अच्छा है, but जब तक तुम apply नहीं कर रहे हो तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है. So just reading something and अपनी life में apply करके देखना, oh this is what it meant, तो वो तभी हो पाता है जब तुम कुछ apply करते हो, नहीं तो बिल्कुल नहीं हो पाता. Right. हाँ, किसी ने लिखा कि मैम इज वेरी दिस थिंग, एंड किसी ने कहा सिंप मत करो. एक तो तुम लोग ये मिसयूज मत करो इस सिंप वर्ड. अगर से कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, आप लोग ही अपने बीच में ही कर रहे हो. देखो आप लोग जब एक लड़की को कॉम्प्लीमेंट देते हो, अगर से वो लड़की बोलेगी स्टॉप सिंपिंग, यू विल नॉट लाइक इट, राइट? सो विद समबडी इज कॉम्प्लीमेंटिंग, टेक इट एज इन योर स्ट्राइड. लास्ट वाले सेशन में जूम सॉरी लाइव यूट्यूब में किसी ने आई लव यू लिख दिया मुझे. सो आई सेड थैंक यू फॉर लविंग मी, थैंक यू फॉर द रिस्पेक्ट. Of course, I don't love you in return, but like I love my audience as such. So that is very respectfully you're supposed to take someone's compliment. So आज जो भी देख रहा है किसी को सिंपिम, ये क्या नया वर्ड सीख लिया तुम लोग, हर जगह उसको नमक की तरह डालते रहे, तो ओवर द टॉप ना यूज किया करो, ठीक है? It's okay if someone compliments, it doesn't mean that somebody is simping, ठीक है? और अब हम questions लेंगे. I hope मुझे beginning से chat पढ़ना पड़ेगा कि who can see your messages. पता नहीं कौन कौन मैसेजेस देख पा रहे, बट सर व्हाट्स द टॉपिक ऑफ टुडेज मीटिंग? इट्स ऑल अबाउट डेटिंग एंड यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस. भाई तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, बाहर आओ. ये कौन है? आई एम गेसिंग
It's just a joke, okay? लड़कियों को नहीं, dating I've में moved पता to होता है I've moved to Gurgaon ना, so a lot of people know that. तो ये मेरे को मैसेजेस आते हैं, भाई तुम्हारा घर कहाँ है बताओ, हम देखेंगे आसपास की तुम्हारी हर एक स्टोरी में देख रहे हैं आसपास क्या है, और तुम्हारे घर हाँ, पहुंच रहे हैं हम बहुत how जल्दी. sweet. ऐसे नहीं करते, don't become stan. मैंने नया वर्ड सीखा है, stan. So you know what a stan is, right, Kshitij? What a stan? Stan. STAN. हाँ. So stalker and fan का mix stan. Oh, हम सिम्प के आगे चले गए हैं हम. हाँ, किसी ने पूछा रिकॉर्डिंग मिलेगी, मुझे नहीं पता. कीप योर फिंगर्स क्रॉस, जब ये खत्म होगा तो हमको समझ में आएगा रिकॉर्डिंग है कि नहीं. ठीक है, एक तो जब तक हम लोग. क्षितिज, तुमने कोई क्वेश्चन पढ़ा तो प्लीज आंसर मैं कर देख ही दो. रहा हूँ. हम कोई पूछ रहा है ब्रो तुम्हारे आधार कार्ड में 1988 की डेट ऑफ बर्थ है और जो बर्थडे है उसमें 30 के हो गए. यार वो फेक आधार कार्ड था. मैं 22 साल का था, क्लब में 25 की एंट्री चाहिए होती थी, तो मैंने 3 साल छोटी करके फेक फोटोशॉप करके वो आधार कार्ड लेके गया था. तो द होल आइडिया ऑफ दैट आधार कार्ड वाज कि मैं 22 की उम्र में भी 25 का हूँ और मैं क्लब जा सकता हूँ. तो मैं असली में 91 बॉर्न हूँ, मैं 30 का ही हुआ हूँ. Oh, you're 30 now. Yeah, I just turned 30. Okay, आपको मैं happy भी 50 birthday. लग रहा था क्या? नहीं यार, क्या बोल रहे हो? मैंने कब कहा? I know you're young. Obviously you're single and you're not married, so you must be around that age. Yeah. हाँ, मैं अपने मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स की शादियां हो रही हैं, तो मैं पिछले मैं उन्हीं के वहाँ पे घूम रहा हूँ आजकल. गर्ल अच्छा, तुम्हारी होगी तो मुझे बुला लेना, ठीक है? इनवाइट मी. बिल्कुल. आप इंडोनेशिया से आएंगे? हाँ. नहीं, आई एम मूविंग टू दुबई. आप इंडोनेशिया में नहीं है? आई एम इन जकार्ता, यस, बट आई एम मूविंग टू दुबई इन जून मोस्ट प्रोबेबली. सही है. दुबई इज आल्सो नाइस. मेरे को स्काई डाइविंग करने जाना है. हाँ, तो जब आओगे तो कांटेक्ट, ठीक है? अच्छा, आप स्काई डाइविंग चलोगे? क्या? नहीं, आई वाज आस्किंग वुड यू गो सिद्धेश भाई, लड़की कैसे पटानी है? अरे रुक ना, हम लोग बात कर रहे हैं, वही बीच तो में बात बता रहा मत करना. हूँ. रुक तो सही, मैं चैट पढ़ रहा हूँ यार, बता रहा हूँ. आई वाज जस्ट सेइंग आपको दुबई में स्काई डाइविंग चलना है. हाँ, I have already done it in Australia, so don't think I cannot. I have no. I'm just asking. I'm going to be with my friends. हमने बहुत I want to go. I'm not very sure. I can't tell you how scary it was. Okay. नहीं, I'm तो gonna go. मेरे को ज़्यादा fear नहीं है इसका. But anyway, हाँ, तो मुझे है, so, मैंने फिर भी like a bucket list. I did it, and it was cold. It was June in Australia, and it was so the whole तुम्हारा पूरा face freeze हो जाता है. It was so. Okay, कोई पूछ रहा है क्षितिज भाई गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड कैसे इम्प्रेस करें? I thought there's a bro code. क्यों? या नहीं, वो कह रहा है गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड. हाँ, अच्छा, नहीं भाई, गर्लफ्रेंड की. अच्छा, गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड कैसे इम्प्रेस? ये सब चीजें नहीं करनी होती है आप लोगों को. अच्छा क्षितिज, व्हाट इज योर आंसर फॉर दिस? यार ये सब मत करो, मैम स्कैंडलाइज हो जाएंगी. नहीं, आई एम नॉट गेटिंग स्कैंडलाइज्ड. यू डोंट नो व्हाट. You have no clue what cases I get, okay? So I can deal with. मैंने ऐसा कोई केस है जो नहीं सुना, from incest to everything. I am on my best behavior today because I'm pretty raw with the way I talk. But अच्छा है यहाँ पे because हम counseling की बातें कर रहे हैं. चाहते हो? ठीक है. नहीं, मैं बस तमीज में रह रहा हूँ. Like मेरा एक तमीज वाला एरिया भी है जो अच्छी एजुकेशन से मेरी जो मिल गया, तो हम अच्छे से क्लीन बातें कर रहे हैं. But हाँ, एक but I will answer this question. I will answer this. This needs to be answered. देखो, अगर से आपकी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है और आपको उसके बेस्ट फ्रेंड में इंटरेस्ट है, लेट्स से कोई ये नहीं कहता कि एक रिलेशनशिप में हमेशा आपको रहना है, कमिट किया भी है तो ऐसा हो सकता है that you outgrown the relationship. So you make sure at least tell your girlfriend that, end the relationship, then move. क्योंकि अगर से आपको कोई चीट करे आपको अच्छा नहीं लगेगा, right? So don't do it with anybody else. What do you have to say for that, Kshitij? Yeah, definitely. It makes sense to be honest and end it and then start over with someone else. Otherwise, because ये betrayal होता है, right? I'm sure. I mean, people go through this all the time. कि you're dating a girl and your best friend starts hooking up, और या फिर तुम्हारा breakup हो जाता है उस लड़की से, and then she starts dating a very close friend of yours. So बहुत ही ज़्यादा painful experiences हैं. ऐसे कई सारे और हैं. But you would not want that done to you, so you should not try. Exactly. To at least not do it. क्योंकि अगर से आपके बेस्ट फ्रेंड को वो आपकी गर्लफ्रेंड पटाती है और उन लोग डेट करते हैं, it will become awkward for you, for them. इसलिए तो वो bro code type होता है कि एक दूसरे के इर्द गिर्द मत करो, क्योंकि फिर बाद में अनकंफर्टेबल हो जाता है आपके रिलेशनशिप्स. और फिर एंड ऑल्सो ये याद रखना, आपने उसके बेस्ट फ्रेंड को तो पटा लिया, लेट्स अज्यूम, पर वो हमेशा ये सोचेगी कि इसने इसको चीट करके मेरे पास आया तो ये चीट करके मुझे भी छोड़ के कहीं और चले जाएगा, right? Right. So true. Be careful of that. Yeah. Very true.
So किसी ने लिखा है, I wish I could talk to my parents like your kids do. I wish more parents Yeah. watch my channel and I could help them out. I mean, still my children still think that वो बोलते हैं ना घर की मुर्गी I think खिचड़ी बराबर दाल बराबर भी नहीं है, इतना हाल खराब है. No matter what you do, it's never enough for the children. Okay, treat her like a wife and she'll ruin your life. Oh, I don't believe that. What do you think, Kshitij? There's a time for everything. If you are not dating and you start treating her as your wife, she's not going to ruin your life. You ruined your own life. But once you start dating, I think it makes sense to do some grand gestures if there's an event or a birthday, anniversary, Valentine's Day. But at the same time, keeping your purpose in mind, not being desperate, काम वाम छोड़ के लड़की के पीछे ही नहीं पड़े रहना कि यार तुम ही सब कुछ हो और controlling हो जाना and weird हो जाना. But definitely when you're dating, you want the romance and the spark to be alive. So when you do those things, I think it's great. But there's a right time for it. अगर तुम And अगर से आप ऐसा कह रहे हो कि make them a wife and then ruin your life, then आपके parents की क्या बात है? फिर तो you are also born out of, you know, तुम्हारे parents ने शादी की, फिर आप पैदा हुए, तो शादी most of us करते हैं, पर कुछ लोग single रहते हैं. अगर से single रहना उसमें भी कोई problem नहीं है, but ऐसा हर चीज को generalize नहीं करते. कितने सारे मेन पीकर औरतों को मारते हैं, कितने बच्चे मेरे पास आते हैं कंप्लेन करने को अपने डैड के बारे में. तो तुम भी कुछ ग्रेट नहीं हो, सब लोग ग्रेट नहीं होते, सब में कुछ अच्छा और बुरा होता है, पर जनरलाइज करना कभी अच्छा नहीं होता. क्षितिज भाई, गुप्त रोग का सोल्यूशन. गुप्त रोग, डज ही मीन HIV और डज इट मीन हार्ट I don't know, romance? No. He means some sexual ones only. Oh, HIV. HIV. Okay. HIV, STDs या something. Okay. आप लोगों को मैं ये बता दूं, रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था और उसने एक नहीं डबल कॉन्डम यूज करके उसको HIV हो गया है. ओके, एंड डबल कॉन्डम्स तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. वैसे भी अलाउड अच्छा नहीं है. इट्स नॉट अ गुड आइडिया. इट रप्चर्स फास्टर. करेक्ट. या फ्रिक्शन की वजह से. एंड अब प्रॉब्लम यह है कि उसके पेरेंट्स को नहीं बता सकते. राइट, मोस्ट ऑफ यू इतने डरते हो कि अपने पेरेंट्स को नहीं बताते. मैंने obviously help किया है डॉक्टर्स के साथ and all that. There are community centers where you can go and you will have to take that medication. That's why please be careful. Casual sex, one night stands, they are very dangerous, very very dangerous. Okay, so solution or sorry, yeah, at least use protection. Definitely. Yeah, and be careful. थोड़ा रिसर्च करके करना. Don't like just, you know, आजकल आप लोग को सेक्स इतना सर पे तुम्हारे सवार है, सबको porn addiction चला है. So be careful. Life is more than this. As I've said it in the porn addiction वाला podcast, जिसको प्रॉब्लम है जाके देख लेना. Okay, क्षितिज भाई गेम करके दिखाओ मैम के साथ. What nonsense. बेटा तू इधर से निकल जा, तेरे लिए लायक ये पॉडकास्ट नहीं है. ठीक है, ये इंटेलिजेंट लोगों की कॉन्वर्सेशन चल रही है. ठीक है, ऐसे चिप्पड़ बातें करोगे तो यहाँ आपको वेलकम नहीं किया जाएगा. आपका क्या ख्याल है? Let's definitely, and let's not read every chat. Let's only read the ones that make sense. Okay, I have a question for both of you. If we connect with very few people and suppose a man connects with a girl after a long time and that doesn't end up with something romantic or a relationship, then how do you get energy to seek more girls? Yeah, Kshitij, go ahead. Because I realize यार कि एक ही लड़की नहीं है दुनिया में और उसके साथ कुछ बात हुई नहीं है अभी तक. मैं दिमाग में ही एक घर बना के बैठा हुआ हूँ. I've created an imaginative world in my own mind which isn't real. So basically you're not even living in reality. अगर तुम सोच रहे हो ये लड़की है, यही होनी चाहिए. I mean, you need to meet the person और अगर कुछ बात हो रही है तभी होगी. Like a relationship doesn't start till it starts. तो तुम दिमाग में relationship मत करो. You have to start living in real life. This is a huge problem. I've gone through a similar thing, but this was back in the day, बहुत पहले. And I realized you have to live in reality. तुम ऐसे assume करके नहीं बैठ सकते हो बस कि एक लड़की पसंद है वही होनी चाहिए बस. Right. Lot of huge problems. Someone is asking, how do you hold up the first few conversation? I think that's the main question of the day, right? That is the skill. वो build करना पड़ेगा. एकदम से नहीं आने वाला है. You have to go out there and have as many conversations as you can, and then you start building on it. फिर उसके बाद then you start to be like, all right, I need to show some intent out there. Intent meaning कि असली में मुझे बात क्यों करनी है. And you start talking like a man would talk to a woman rather than a friend would talk to a friend. So एक platonic conversation से you get into more of a flirty vibe where तुम्हारा intent clear हो रहा है. Then उसके बाद you start to have more fun.
So a conversation में जाके ये नहीं करना what do you do, where are you from वगैरह, but you go in and you just create more fun, like जैसे banter कहते हैं, बकचोदी कहते हैं इंडिया में. So that stuff जहाँ पे emotional highs आए and lows आए, where you're flirting with her, where you're teasing her, थोड़ा सा flirt and tease चल रहा है साथ साथ में, you're making her laugh, you're just having fun yourself rather than just making it an interview जहाँ पे तुम question पूछ रहे हो and she's replying. वो बहुत boring हो जाता है. So but the first step is always you'll have to start taking some action. You don't learn how to have a conversation by just watching videos and just sitting. Like there are enough videos on the channel and there is enough information available on the internet, but लोग apply नहीं करते हैं तो वो सब कुछ waste है. Achha, so somebody is asking, I'm 17, pretty good looking, smart, but before 9th class, I never had interest in girls. I was taking that Sakir Bhai wali baat seriously, but then lockdown happened and I developed interest in girls. Now I have no female friends or girlfriend. Most girls in my neighborhood have different circles of that smoking guys. I'm guessing ladke smoke kar rahe. What should I do? Online isn't working at all. Even normal conversation, girls leave me on scene and send. I don't know what is send. So what do you suggest? Zone हो जाता है. Right. I suggest definitely एक तो यार class 9 के बाद ही interest जागता है तुम्हारा, because that's when you're hitting puberty, right? Puberty or adolescent, तभी ये तुम hit करते हो, उसके पहले तो नहीं करते हो. So now if like I'm thinking he's still in school, right? Because 9th के तक interest नहीं, I think he must be in 11th or 12th or something, or maybe अगर college में भी है तो तुम्हारी life खत्म नहीं हुई है यार. Actually it's just started out. और तुम्हारी जिंदगी बस इतनी सी नहीं है, तुम्हारी सोसाइटी जितनी या एक दो लड़कियां जिनको तुम जानते हो. So definitely you need to start again, number 1 taking action, number 2 learn how attraction works, and number 3 learn how to converse without creeping the other person out, and start having more fun conversations, start having more clearer conversations. That would really help you out. So it's about practice, it's about putting yourself out there. It's not just कि यार ये, and then anytime you're saying ना कि ये work नहीं करता, ये work नहीं करता, ये work नहीं करता, it depends what all have you done to make it work, what all changes have you done to make it work. Have you improved on yourself? This online dating work नहीं कर रहा भाई, तुम्हारी pictures कैसी? I'm pretty sure your pictures are going to be pretty shit right now, इसलिए नहीं work कर रहा है. Because we've had clients जिनका बहुत amazingly work करता है, जिनका पहले भी नहीं work कर रहा था. Then it's about, do you take care of your styling and grooming? And then उसके बाद तुम्हारी conversational skills कैसी है, when you text तुम्हारी texting वगैरह कैसी है, because it can be broken down into an algorithm as well, because online dating specifically अगर देखा जाए, it's only an algorithm. You swipe on let's say you swipe on 100 matches, a percentage of them get converted into like they match back with you. उसके बाद तुम मैसेज करते हो, फिर कई लोग उसको रिप्लाई करते हैं, कई नहीं करते हैं. उसके बाद a percentage of them give you their Instagram या WhatsApp, फिर a percentage of them you go out on a date with. तो यहाँ पे जहाँ पे भी रोड ब्लॉक तुम्हें नजर आ रहा है, इट्स क्लियर कि तुम्हें वो वाले स्टेप को अपना इंप्रूव करना है. बट इट कैन नॉट जस्ट बी लाइक कि ये वर्क नहीं कर रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है, एंड देन पुटिंग योरसेल्फ इन सच अ विक्टिम माइंडसेट कि मेरी लाइफ में कुछ भी वर्क नहीं करता है. You need to be out there to like, yeah, this is the time for me to learn, this is the time for me to improve on my skill set. So it's all about skill set. अगर 9 तक तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं था तो तुम्हारा skill set था ही नहीं ना पहले से. So it's about building that skill set. Okay. Whoever's raised hands, but first I'm going to ban one person. एक minute. Ma'am, what is your fans account? बहुत मन कर रहा है तुझे गाली दूं, but ठीक है, आपको हम remove कर रहे हैं. कुणाल, आप बहुत बदतमीज इंसान हो, and I do not like it. Please, I wish I could abuse you right now, but ठीक है, I'm going to be a little nice and get lost. Just 1 second, yeah. Okay, sorry. Yeah. Who has raised hand? 2 people have raised hands. Please ask the question. Yeah. Hello, ma'am. जी बेटा बोलो. Ma'am, am I audible to you? Yes बेटा बोलो. Yep, Okay. clear. Hello, Kshitij. What up, bro? How are you? मतलब it's a fan moment for me, man. मतलब मैंने सचिन से बात करी थी, आपके जो मतलब हैंडल करते हैं टीम में. हाँ. Yeah. So उन्होंने उनके साथ बात की थी मैंने about this coaching and all आपके. So जब उन्होंने प्राइस के बारे में बोला तो मेरी फट गई. Because I can't afford that. It's okay, bro. यार अगर तुम YouTube भी follow कर लोगे ना, right? अगर तुम follow कर सकते हो, like coaching में तो हम follow करवाएंगे, but अगर तुम कर सकते हो, you'll get amazing results. You have an epic free resource out there. तो
या मतलब आपके YouTube में जो वीडियोस है, मतलब दे रियली हेल्प मी लाइक अप्रोचिंग एंजाइटी वगैरह वगैरह वगैरह, इन बहुत है यार। सबको ट्रीट करने के लिए एंड कॉन्फिडेंस को ट्रीट करने के लिए कि यू नो। और हाँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन अ रिलेशनशिप, वन पर्सन, दोनों पार्टनर्स के बीच में कोई एक जो है वो एफर्ट्स पुट करना सडनली बंद कर देता है। तो अब मैं मतलब दूसरे पर्सन को क्या करना चाहिए कि वो जो पर्सन एफर्ट्स पुट ना कर रहा है वो भी कैसे अपना इन्वेस्ट करे रिलेशनशिप में, ठीक है। क्योंकि ये चीज धीरे धीरे ना काइंड ऑफ आपको लगता है कि शायद वो इंसान उतना एफर्ट पुट नहीं कर रहा है आपके जितना, और इट रियली हर्ट्स कि आप जब देख रहे हो कि आप उतना एफर्ट पुट कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटकम नहीं मिल रहा है, या फिर वो दूसरा इंसान उतना एफर्ट नहीं दे रहा है। और I hope you getting my point. Yeah. So I'm assuming it's the girl that isn't putting the effort now, right? And no. And उसको Yeah, excuse me. हाँ, I couldn't hear you properly, man. मैं कह रहा हूँ I'm assuming कि लड़की एफर्ट नहीं डाल रही है अपना, हाँ, right? तो उसमें basically she doesn't care as much as you do, so if it's a long term relationship, right? 3-4 साल की relationship है, then what should we do? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, it means that she doesn't care as much as you do, right? Yeah. इसलिए वो एफर्ट नहीं डाल रही है. So you are the person who wants the relationship more than she wants it. हाँ, kind of. क्योंकि True, right? इतने So दूर आ चुके हैं तो. yeah, so now you're the one who's turning more desperate, and she's not. Yes, obviously. Right. So now the power dynamic is shifting in her favor. Right. So basically, now you need to ask if there's enough attraction there or not. And if you are being desperate, if you are just making her your life and you care so much more. It's a long distance, hey, yeah, you guys are in the same city. Long distance है. Exactly. It's a difficult sell, bro, now. Because अगर 3 साल हो गए हैं और तुम डेस्परेट हो और तुम्हारे पास कोई चॉइसेस नहीं है, एंड शी नोज तुम्हारे पास चॉइसेस नहीं है, और तुम और डेस्परेट होते जा रहे हो और उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, और लॉन्ग डिस्टेंस वैसी, एंड शी हैज शिट टन्स ऑफ चॉइसेस herself. The more desperate you get, the more the attraction is going down, and the less attractive you are being. So it's a pretty fucked up situation. I mean, उसको शुरू से you should have not reached the point जहाँ पे ये हो रहा है. पर ऐसा नहीं हो सकता ना क्षितिज. क्या होता है कभी कभी रिलेशनशिप में वन ऑफ द टू और बोथ टुगेदर आउटग्रो दैट रिलेशनशिप में. मुझे लगता है जैसे हम कपड़े आउटग्रो, सो मे बी शी इज आउटग्रोइंग यू, मे बी, बट द ओनली थिंग यू कैन डू राइट नाउ is one, tone down your desperation, because अगर से जितना आप लोगों के पीछे पीछे भागोगे वो आपके आगे आगे भाग रहे, वो तो वैसे ही गलत रिलेशनशिप है. पर you have to make her sit down and ask her, are you really interested in working on this relationship? Do you want to? Because imagine एक पेड़ है, ये आपका रिलेशनशिप है, इस तरफ से आप पानी डालो, इस तरफ से आप पानी डालो, इसका पानी इधर नहीं जाता, इसका, सो उसको फ्लरिश होने के लिए दोनों को इक्वल अमाउंट्स ऑफ एफर्ट डालना. मतलब कभी कभी ये इंसान ज्यादा करता है, कभी वो इंसान, पर अगर से एक इंसान कंप्लीटली छोड़ देता है इन्वेस्ट करना अपना टाइम, अपना एनर्जी, दैट मीन्स अभी unless you want a placard, her to hold a placard and tell you it's over, these are one of the red flags in a relationship, right? Yeah, true. Another word for someone who's outgrown the relationship is that there is no attraction. I mean, वो same बात नहीं रही है, but generally as a person also you outgrow. So communication, like ma'am said, is definitely very important. अगर तुम communicate कर सकते हो, तुम पूछ सकते हो कि like what's going on. You can be like, I'm a bit worried about this. थोड़े time से I feel like you're not as invested or you're not as into me now. What's going on in your mind? And then वहाँ से maybe something can clear up. Or how to maintain this attraction along with your relationship, मतलब long term के लिए ये attraction को गूगल करो. तुम्हारा एक क्वेश्चन इतना टाइम लेगा, हम किसी का क्वेश्चन गूगल पे बथेरे आइडियाज है. I'm sorry how ma'am, to keep long distance dating lively, बहुत आइडियाज है, बहुत ज्यादा. तो इधर वो तो हम वैसे ही नहीं कर पाएंगे, तो जरा गूगल कर लो and try doing that and
liven up the whole thing. कभी कभी क्या होता है 3-4 साल के बाद वो मंडेन हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है एक रिलेशनशिप, तो वो स्पार्क लाना पड़ता है और उसके लिए बहुत सारे आर्टिकल्स है. ठीक है, I'm sorry मैम, वो Yeah. थोड़ा Not- nervous not हो गया at all, था, because तो I am Yeah, just definitely. नहीं कर पाता था अच्छा से. या क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. Yeah, yeah. You know, it's Ma'am, like I'm not very gonna take difficult. any of your time. Yeah, and Yeah. start caring less also, यार. Start caring less. Like you need to build that abundance कि अगर ये लड़की जा रही है तो तुम ऐसे नहीं हो कि यार please like don't never be in a space of begging कि please stay. It needs to be win-win for both of you. तुम्हारे लिए भी और उनके लिए भी. अगर नहीं है तो try working on it. और अगर work नहीं कर रहा है, don't lose your self-respect. That's what I would say. Okay, someone has asked how much Ma'am. looks matter in dating. They matter a bit, but that's not the be all. थोड़ा सा matter करता है. If you're good looking, it's of course better for you. But अगर तुम्हें conversation करना नहीं आ रहा है, तुम्हें risk लेना नहीं आ रहा है, तुम approach ही नहीं कर रहे हो, तुम अपना rejection को deal नहीं कर रहे हो, तुम attraction build नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें emotional connection बनाना नहीं आता है, तो तुम्हारे कुछ भी looks हो, you are just sitting there waiting for someone else to come approach you. You still need to learn these things. I would any day choose confidence over looks any day. Like make me the most ugliest person or like the least good looking person, but if I have confidence, I will be better than almost everyone out there. Like even now, so I have a video where so the video got title was picking up girls in a wheelchair. So this was, so I went to Connaught Place and we got a wheelchair to show people that someone who's in a wheelchair can also meet women. The only thing I had was confidence. मैं कोई pity attraction नहीं ले रहा था, कुछ नहीं ले रहा था, and that worked. So I'm pretty sure if I go bald or if I shave off my beard or if I wear a fat suit even or if I just put makeup on and I look really ugly, but I'm just confident, that will work more than the looks part. So Yeah, looks and के this लिए is a अपना यार at man's least point of view, right? This is a man, but even as a Yeah. girl, let me tell you what matters to us most. तुम लोग को गलत फहमी होती है कि हम सिर्फ गुड लुकिंग लड़के, उल्टा हमको टेंशन होता है लड़का बहुत ज्यादा गुड लुकिंग होता है, उतना ज्यादा हमको लगता है कि वो ट्रस्ट वर्दी नहीं होता क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिजी होता है. ठीक है, तो अगर से वो ऋतिक Right. रोशन जैसा दिख रहा है, हम वैसे ही बहुत सोचने वाले हैं. सेकंड, अगर से आप अपने आप को ग्रूम अच्छे से करोगे, आप में कॉन्फिडेंस होगा, आप केयरिंग हो, आप एक अच्छे इंसान हो, आई थिंक दैट मैटर्स द मोस्ट टू ऑल गर्ल्स. आई मीन नॉट ऑल, लेट्स से मोस्ट गर्ल्स लुक फॉर दैट इन अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है. एंड ऑफ कोर्स कि आप हार्ड वर्किंग हो, यू आर एजुकेटेड, आप यू नो यू आर नॉट लाइक स्लीपिंग ऑल डे, वो भी मैटर करता है कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसे है. करेक्ट? Yeah. And Anybody who groom तुम raised कर सकते हो यार hands, अपने sorry, आप को. Kshitij, yeah, बोलिए. हाँ, क्या कह रहे Like थे? अगर तुम्हें लग रहा है you're not very good looking, you can definitely do stuff about like get a nice haircut. If you have a beard, grow it, or don't have a beard, छोड़ो. Learn basic decent things about fashion. Right. Wear fitted clothes. तो बहुत ज्यादा improve कर सकते हो. मेरा एक highlight भी है, Instagram highlights आते हैं ना वहाँ पे makeovers करके. So you can see कि पहले जब clients आते हैं जिनको हम fashion के लिए help करते हैं, उनका before और after में क्या difference है. There are huge differences that are there, almost unrecognizable. और 1-2 घंटा ही लगता है, ज्यादा time नहीं लगता. There is a podcast I did with Sushant, who's a grooming coach and for men's lifestyle coach, and उनका भी podcast आप देख लो, मेरे चैनल पे है Cerebrate with Rachna. वहाँ पे सीखो, वो भी सिखा रहे हैं कि कैसे. Besides इंटरव्यू के लिए हमने 2 सेशंस किए थे, एक रेगुलर ग्रूमिंग पे और एक इंटरव्यू ग्रूमिंग पे. So please go and watch that. Everything is free. आप लोगों को सिर्फ ये करना है. Pratham, you have a question. Nilangshu, you have a question. One of you go first. Whoever. Yes, ma'am. Yeah, go ahead. Hi, Kshitij bhai. First of all, this is a fan moment for me. Like I've been following you from 2019, and it's finally I can speak with you. Thanks to ma'am. Thank you. Yeah, thank you. And your content is super amazing, bhai. Like बहुत help किया मेरे को real life में. Thank you. But I have a question. कि now that I've sorted my मतलब basically approach part तो sort हो गया, approach anxiety वगैरह नहीं कुछ भी. But I have this question कि मैं एक बार relationship में आता हूँ, it's constantly a burn for me. Like it's a constantly a game. कि like मैं ज़्यादा desperate नहीं होऊंगा. I don't look like more desperate. I don't मतलब मैं ज़्यादा time पे reply नहीं करना चाहता हूँ. या फिर मैं मतलब हमेशा एक माइंड में रहता है कि ये शायद ज्यादा डेस्परेट पोर्ट्रे हो जाएगा, तो मैं ये चीज नहीं करूंगा. सो लाइक इट्स लाइक अ बर्न आउट मोमेंट फॉर मी. लाइक हर एक रिलेशनशिप में यही होता है. एंड आई हैव दिस टेंडेंसी इन मी कि मेरे को कमिटमेंट इश्यूज है थोड़ा बहुत, कि व्हेनेवर आई स्टार्ट अटैचिंग विद समवन आई फील लाइक नहीं यार वो कभी छोड़ के चली जाएगी तो आई जस्ट पुट आउट. तो हाउ डू आई जस्ट ये 2 इश्यूज है मेरे. हाउ डू आई counter them and what are your views about it? Yeah, you will have to start relaxing in a relationship. It's
it's crazy अगर तुम relationship में जाके भी सोच रहे हो कि मैं game कैसे करूं और मैं desperate कैसे ना हूं, because in a relationship you want a companion, you want a partner जहाँ पे तुम chill कर सकते हो, relax कर सकते हो, and you can share those deep dark things inside, right? अगर वो नहीं हो रहा है then it's a problem, definitely, as you're right. So it'll be difficult for you, but at least try अपनी side से कि तुम chill कर सको, relax कर सको, and तुम communicate कर सको सामने वाले को. Secondly, it definitely it makes sense to look into your childhood, how that's been, how the relationship between your parents have been. Because अगर बड़े होते हुए the relationship between the parents isn't very ideal, then commitment issues होते हैं. Or if the mother is burdening you with the problems, so then you don't want those burdens while growing up as well with the other people. Okay. So I have a workshop called Warrior Monk Workshop that should help you out with a couple of these things as well. But definitely it's more inner work based. If I would have had more information about your childhood and how you were growing up, or वो सब कैसे रहा, past relationships कैसे रही, self esteem कैसे build हुई है, then we can get to the root cause. But अगर root cause पे नहीं जा रहे, at least surface level पे you can use your willpower to move towards it, because now you've identified it कि at least थोड़ा सा मेरे को fear है. So it's about feeling the fear and doing it anyway, and trying to build that trust in everything, if you can. And how old are you, ma'am by would the like way? to add on. Yeah. I'm 22, ma'am. हाँ, तो एक तो जो क्षितिज जी बोल रहे हैं is called attachment, anxious attachment, secure attachment. Exactly, ये different attachment types theory, of yeah. attachments होते हैं. But मैं कहीं ना कहीं ये मानती हूँ, every time if you blame your parents for the person you are today, you are never going to grow. So victimhood पीछे छोड़िए, आपके parents कभी perfect नहीं हो सकते, कभी हमारी एकदम secure attachment बहुत मुश्किल से होती है. It's not that हम लोग outgrow नहीं कर सकते इसको, but आपको ये समझना है, आप 22 के हो, आप कोई भी relationship में आओगे, suppose आप 28-30 में शादी करोगे, इतना लंबा वैसे भी आजकल के जनरेशन में बहुत कम ये रिलेशनशिप चलती हैं. तो इट्स लाइक सेइंग आई एम सो petrified that I'm going to lose my hair. You're going to lose your hair sometime or the other, as you grow older. So you cannot cling. The more you cling to people, the worse it's going to be. So you need to understand, enjoy the moment, live it now, and don't hold on to people, क्योंकि उनको पता चलता है आप जब desperate और clingy act करते हो, वो उतना जल्दी आपको छोड़ के जाएंगे. ठीक है, और इतना कभी हर रिलेशनशिप का अंत होता है. देयर इज एन एक्सपायरी डेट, या तो इंसान खत्म हो जाता है या रिलेशनशिप खत्म हो जाता है. तो किसी के साथ इतना भी फर्स्ट अपने आप को पुट योरसेल्फ फर्स्ट. ओके, लाइक इट्स, आई थिंक सब लोग मोस्टली यहाँ जो देख रहे हैं, आप सबकी सेल्फ वर्थ बहुत लो है, आपकी खुद की जो इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम है. उस पे एक साइको एजुकेशनल ग्रुप किया है. प्लीज डू वर्क ऑन योर सेल्फ वर्थ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट so that you can be a better boyfriend, girlfriend, husband, whatever. So Kshitij, what do you have to say for this? Yeah, I agree. Attachment styles and everything, all of that is there. So it's inner work जो तुम अपना self worth and उसके लिए कर सकते हो. And then definitely the second part is willpower. So surface level, at least you can push through it, because your inner patterns will come up. They will make you avoidant. They will let you be away from that. But you can definitely push away. Victim mindset क्या, like I feel a lot of you out here, तो काफी लोग victim mindset में नहीं होंगे. अगर हैं तो उसके बाहर निकलेंगे तो बहुत better रहेगा. Like when you take charge. So yep. Kshitij, how much time do you have? Because we have so many questions. Yeah, I really want to bounce actually, because I'm really late. I had committed to a friend कि मैं 6 बजे मिलता हूँ, but it's already 6:15. Sorry people. Are you going to come back? Yeah. I mean, yeah, sure. I am in Delhi maybe only. March or I was something. supposed to. We could do another one. हाँ, okay. Yeah. We could do another one. इनके इतने questions हैं आपके लिए. Yeah. I'm also I'm doing a webinar on. I'm doing it on Wednesday, 26th Jan को 9 p.m. So वहाँ पे maybe I can take up some of the questions. It's a free webinar. YouTube पे एक वीडियो डाली है, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा तुम्हें. ठीक है, तो रजिस्टर कर लो यार. वहाँ पे it's free again. So if anyone has any questions, वहाँ पे वो ले लेते हैं. There was one question I think जो मैं देख रहा था यहाँ पे, someone was asking. Sure. Yeah, someone is like मैं कोलंबस में CGM की लड़कियों से कैसे मिलूं? So this is a very niche question. I'll just answer it because we're from the same school. So there's a girls' school right next to us. Bro, अगर तुम चर्च गेट से आ रहे हो तो बहुत easy फिर भी रह जाता है. तुम्हारे बस में लड़कियां तो हाय हेलो कर सकते हो. उनसे डेफिनेटली, बस में नहीं है तो तुम्हारे कोई दोस्त है, उनकी दोस्त होंगी, वो कर सकते हो. नहीं तो स्कूल कॉम्पिटिशंस होते हैं यार, उसमें चले जाओ, फेट में चले जाओ, सोशल्स में चले जाओ. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स. किसी दोस्त के थ्रू मिलो, वैसे करके यू कैन स्टार्ट टू एटलीस्ट टॉक टू देम. टॉक करने के बाद, बात करने के बाद वो फिर आई मीन सेम स्टफ दैट यू टॉक ऑन YouTube, वो है. तो yeah. Somebody saying introvert to extrovert. How does one do that?
I think the main question इनका ये नहीं है कि मैं introvert से extrovert कैसे बनूं, but it's just like मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, मैं बातें करना कैसे start करूँ. तो start करो यार, थोड़ा डर लगेगा, but वो डर के ऊपर तुम like you will definitely get over it and you'll be happy for life. यार एक बार का डर होता है ये, तुम जो करने लग जाओगे, थोड़ी बहुत approaches करोगे, थोड़े बहुत rejections आएंगे, but after that you're sorted. Like I was 21 when I started learning, 20 actually when I started working on this part of myself as well. Now being 30, I'm like I am sorted for life. I never have to be in a bad relationship because I know I can leave instantly. अगर वो बहुत ही बुरा होता, I would definitely try to make it work. But अगर work नहीं कर रहा, I can leave instantly. Because मैं ये नहीं सोचूंगी यार अब कौन सी लड़की मिलेगी, क्या मिलेगी, कौन मिलेगी, नहीं मिलेगी. Because I have this skill set built कि मैं जाके if I want to meet someone, I can definitely go meet them. तो मेरा dating बहुत ज़्यादा sorted है and that makes me feel very good and in no hurry to get married as well. तो एक बहुत ही secure सा feeling आ रखा है यहाँ पे, which I really like. Okay. Sorry, people. Kshitij has to leave. He has another commitment. I will have to bounce. And we will do it again, hopefully by March, April, something like that. Us में podcast अलग चल रहे हैं. So I hope you'll come back to answer all these questions. I don't know whether I'm going to keep this chat. I will. Yeah. Thank you so much for having me on. My pleasure. I had fun. Yeah, it was really nice talking to you. It was very. It wasn't too much stress. It was quite. It flew. It was definitely. The flow was really nice. Yeah. All right. Yeah, you're a lovely host. Thank you for having me on board. Thank you, everyone. Okay, I will see you guys soon. Okay.